only hope and pray that he may not continue with this resignation. That is why these 2-3 days we have sought, and he has also sought to talk to us. Let us hope, let us see that everything good prevails. After that, if situation so arises, we will see, but I am not a contender. पवार साहब ने जो डिसीजन लिया है, सर पवार साहब ने जो डिसीजन लिया है, आपको लगता है कि पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से पवार साहब ने इतना बड़ा डिसीजन लिया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है। कोई पार्टी में अलग ग्रुप, फूट फाट, ये सब बातें केवल स्पेक्युलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं और आगे भी पार्टी एनसीपी एज ए पार्टी एक रहेगी, एकजुट रहेगी। उसमें कोई बिखराव या कोई फूट आने वाली नहीं है। ये मैं आपको अधिकृत स्पष्टता ऐसे में अगर अपने निर्णय पे बने रहते हैं तो पार्टी में किसी एक के नाम को लेकर कंसेंसस बन सकेगा बिना किसी डिफरेंस के? मैं आपको गारंटी के साथ 100% कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में पवार साहब के मामले में या सक्सेसर के मामले में कोई दो राय नहीं होगी। जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल सर्वानुमते होगा और सबको पसंद आए ऐसा ही फैसला, अगर वो परिस्थिति आई तो होगा। सर, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पार्टी की लाइन तो करेंगे या नहीं उसके बारे में शंका उपस्थित की जा रही है। कैवेट के शब्द का उपयोग किया। शरद पवार साहब पार्टी के सर्वा सुप्रीमो आज है और हमेशा रहेंगे। पद केवल एक परिभाषा होती है। पार्टी की आत्मा, पार्टी का दिल, पार्टी की जान, पार्टी की पहचान ये शरद पवार ही है और शरद पवार ही रहेंगे। और उनका मार्गदर्शन और उनकी सक्रियता पार्टी के कार्यों में आपको हमेशा नजर आएगी। चूंकि आपने अपनी व्यक्तिगत बात कही कि आप तैयार नहीं हैं, यही बात जो है अजीत जी ने भी कही, ऐसे में क्या सुप्रिया ताई के नाम तक आप तैयार होंगे? अभी जब वो प्रक्रिया के लिए मीटिंग में मैं बुलाऊंगा तब मैं आपको उसकी बात करूंगा। त्याला विचारू द्या ना, एक नंतर तू विचार। गेल्या 2 दिवसापासून कार्यकर्ते आंदोलन करत आहे, उपोषण करत आहे। शरद पवार साहेबांनी त्यांना आतमध्ये बोलवलं होतं, समजून घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, यानंतर पुढे असे आंदोलन होणार आहेत की नाही? असं आहे बघा, हे काय आंदोलन आम्ही काय घडवून आणलेलं नाही आहे। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्तीने म्हणजे जे काही म्हणजे त्यांची भावना व्यक्त करण्याचं काम केलं आहे। आम्ही कसं त्यांना समजुती घालणं, त्यांना शांत करणं हे तर कर्तव्य आहे पवार साहेबांचंही आहे, आमच्या सर्वांचंही आहे, ते आम्ही करत आहोत। कमेटी बनाई है प्रफुल्ल जी, काही मध्यम मार्ग निघेल असं वाटतंय का तुम्हाला? असं आहे की सर्वप्रथम जे आम्ही प्रयत्न करत आहोत ते 2 दिवस 3 दिवस आम्हाला जे मुदत पाहिजे ते होऊ द्या, नंतरच आपण हे सगळे चर्चा करत राहू। आज सगळ्या विषयावर तुम्ही जर आता करत राहिले तर आम्ही काय उत्तर देणार? जो नए अध्यक्ष के लिए जो कमेटी बनाई है, अगर वो कमेटी सर्वा तौर पर ये कह देती है कि प्रफुल्ल पटेल को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे प्रफुल्ल पटेल? अभी देखिए, मैं सपने नहीं देखता हूँ मुंगेरी लाल के, और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होगा फैसला अच्छा ही होगा। पार्टी के सभी वरिष्ठों के अंतर्गत ही होगा, मगर पहले वो परिस्थिति, अभी वो मीटिंग बुलाने की आएगी या नहीं आएगी वो हम आपको कल बताएंगे। महाविकास आघाडीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, कारण वज्रमूठ सभा पुढच्या रद्द केल्या जात आहेत, म्हणून ह्या निर्णयाचा परिणाम महाविकास आघाडीवरही दिसतोय का? मला एक स्पष्ट करायचं आहे, कारण ही चर्चा झाली होती आणि तुमची काही चॅनलमध्ये बातमी आम्ही पाहिली। वज्रमूठ सभा 1 तारखेची जी होती मुंबईला, त्याच दिवशी ह्या उन्हाळ्याच्या गरमीच्या तडाख्यामध्ये हे पुढची सभा थोडी टाळावी किंवा पोस्टपोन करावी अशी सगळ्या नेत्यांमध्ये त्या स्टेजवरच चर्चा झाली होती।
आणि त्याच्या आणि कालच्या पवार साहेबांच्या राजीनामाच्या कुठलाही म्हणजे संबंध येत नाही. वज्रमूठ सभा किंवा महाविकास आघाडीची चर्चा आम्ही इथे करायला बसलेलो नाही. हे जे काही घडलं आहे ते कालची गोष्ट आहे. जे तुम्ही म्हणता ते परवा ऑलरेडी चर्चा होऊन निर्णय झालेला होता. सर आपने कहा की कोई भी ऐसा नाम चुना जाएगा. देशातील अनेक नेत्यांची चर्चा सुरू झाली असेल तर देश पातळीवर याचा इम्पॅक्ट काय लागतोय, काय चर्चा त्या संदर्भात असं आहे. पहिलं आम्हालाच तरी ॲब्झॉर्ब करू द्या ना. पहिलं आम्हाला पण म्हणजे ते आत जरा हे डायजेस्ट पचवू द्या की हे जे पवार साहेब म्हणले हे आम्हाला मान्य आहे की नाही. ते आम्ही आमच्या प्रयत्न त्यांच्या समजुतीचा चालू केला. It's been 24 hours, more than 24 hours since Sharad Pawar has declared his decision. What is the future course of action going to be? Is any meeting going to be called in the coming 1 or 2 days? Is the committee deciding on meeting by itself and deciding the future course of action? So what are the three What next is the steps? next step? 3 steps. The next. See, very clearly I would like to say that Mr. Pawar resigned yesterday all of a sudden in a course of his speech during his book launch. Now we were all caught by surprise, we were all shocked and we were of course dismayed and very sad. All happened suddenly and as a consequence of which you saw yesterday, couple of hours all of us tried our best to make sense of what was happening, was trying to plead with him, convince him, and that was there for all to see. Now the issue is we did manage to speak to him and he asked for a couple of days, let me think in my mind what I should do. So 2 days or 3 days means that was yesterday. Today at least I don't think we can ask such a big tall leader to immediately come and give us an answer to what our doubts are. The third thing is about having a new leader or whenever we have that process, I will be able to only tell you once the first decision is finalized. If the first decision is not yet finalized, how do we take the second step? The second step is only a consequence of the decision finally in the first step which has been taken. So we'll wait for that, and if at all there is a decision to be taken about the successor, I as the senior most person in the committee, as the national vice president, will call a meeting in Mumbai in the next whenever that time comes in the event of a final decision by Mr. Pawar, and that will be known to all of you, and of course that meeting will be a meeting where many more people will be attending. आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि एक ऐसा नेता चुना जाएगा जो जिसको सब लोगों की जिसको खुशी होगी रजामंदी होगी. सुप्रिया सुले और अजित पवार फॉर यू. Now why are we talking about the next president when the current president we want him to continue? So it is Sharad Pawar. All other things, all these things are speculative. Let us first cross the bridge, then we will see what next comes. One question please, how the national opposition parties are looking at this? Is there been any call from Sonia Gandhi ji, Uddhav Thackeray ji to Sharad Pawar, any idea that you have? No, I don't know because all the time 24 hours I will not be able to know who's calling Mr. Pawar. But I'm sure a lot of senior leaders across the country have expressed their maybe their concerns directly to him or to some of our colleagues. So, well, that is expected. After all, Mr. Sharad Pawar is a very senior leader of the country. He is not just the president of NCP. He has his own stature, standing in the country. And it is but natural that people look up to him beyond the NCP and in the interest of a national agenda in this country. सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अगर आप नेक्स्ट सेकंड स्टेज पर अगर ये डिसीजन लेते हैं नए प्रेसिडेंट का, तो उस प्रेसिडेंट के लिए नेशनल एक्सपीरियंस होना कितना मायने रखेगा? भाई साहब, हमारे पास वो प्रश्न के बहुत जवाब है, मगर हमारे पास वो जवाब देने के पहला जो प्रश्न है उसका फैसला होने के बाद ही हम दूसरी बात करेंगे.